अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर ड्रॉप्स अ कॉइन। ठीक, एलिवेटर है, यहां पे आपने एक कॉइन ड्रॉप कर दिया, राइट। द कॉइन रीचेज द फ्लोर ऑन टाइम t1, यानी यहां से इसको यहां तक जाने में इसको t1 टाइम लगा। अब दूसरे वाले केस में पूछ रहा है द एलिवेटर इज मूविंग यूनिफॉर्मली, मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, v इक्वल टू यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन इसका अभी भी 0 है। अब आपने कॉइन को ड्रॉप किया, तो बच्चों आप जब कॉइन को ड्रॉप करोगे तो कॉइन की भी स्पीड होगी, इसीलिए इसको हम लोग किसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे, लिफ्ट के। सो विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, भाई टाइम तो किसी के फ्रेम में सॉल्व करो सेम आता है ना। फर्स्ट केस में तो लिफ्ट रुकी हुई है तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो आपका टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, अंडर रूट जो भी हाइट से आपने किया है 2h/g। बाद में सेकेंड वाले केस में विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट अभी भी एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट 0 है, u रिलेटिव अभी भी 0 है। भाई a रिलेटिव अगर लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखें, सॉरी a रिलेटिव लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दैट इज g माइनस 0, तो खत्म हो गया। इसी को g इफेक्टिव कह देते हैं। तो g इफेक्टिव अगर चेंज ही नहीं हुआ तो टाइम तो सेम ही लग रहा है ना, हाइट वही है, s रिलेटिव अभी भी h ही है। तो यहां से जो आप t लिखोगे बच्चों, तो t की वैल्यू आती है इन जनरल 2h/g इफेक्टिव। अब g इफेक्टिव क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट तो 0 है, तो g इफेक्टिव में कोई चेंज ही नहीं आया, तो वो 2h/g ही होगा, सेम टाइम लगना है। A small block slides down on a smooth inclined plane starting from rest at t equals to 0. Okay, so we have a smooth inclined plane, block slides down, right? Initially the block was at rest, which is important thing. So the initial velocity of the block was 0. Okay, let Sn be the distance traveled by the block when the time interval n minus 1 to n means it is the distance traveled by the block during the nth second of its motion, and Sn plus 1, basically they are asking distance traveled in nth second divided by distance traveled in n plus 1th second. Okay, we already have the formula here. This is actually the distance traveled in nth second, not during total n seconds, particular nth second, right? We have the formula here, u plus a by 2, 2n minus 1, acceleration being constant, u is 0, a by 2, 2n minus 1, dear students. Now distance traveled in the n plus 1th second would be 2 times n plus 1 minus 1. We get this value as a by 2 into 2n plus 1, dear students. So the ratio would be 2n minus 1 divided by 2n plus 1. If we calculate Sn divided by Sn plus 1, we would get the value as 2n minus 1 divided by definitely 2n plus 1. Option 4 is chosen as the correct option. Right, dear students? यहां पे इन्हें वेलोसिटी को x का फंक्शन दे दिया, v इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, बीटा इंटू एक्स रेस्ट पावर माइनस 2n. Beta and n are constants and the position of particle. The acceleration of the particle as a function of x is given by. यानी अब हमको acceleration of particle निकालना है as a function of x. तो ये बच्चों जब velocity function of x होती है तो हमने आपको कितने क्वेश्चन कराए हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू आप v dv/dx लिखिए, याद आया? तो v की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको पता ही है, dv/dx निकालना है, तो v की वैल्यू हमें दे रखी है बीटा x रेस्ट पर माइनस 2n, तो यहाँ से dv/dx डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, सो माइनस 2 बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1, खत्म, यहाँ डाल दो। तो पहले v डालो, बीटा v इज बीटा x की पावर माइनस 2n, ये वेलोसिटी हो गई, इंटू dv/dx हो जाएगा माइनस 2 बीटा इंटू एक्स की पावर माइनस 2n माइनस 1, कंबाइन कर दो, तो दिस इज माइनस 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर इंटू एक्स रेस्ट पावर माइनस 4n
minus 1. So minus 2 beta square minus 4n minus 1. A vehicle travels half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v, its average speed is. So I'll directly use the formula here, dear students. You have the formula for average speed. When you travel equal distances with different speeds, when you travel equal distances with different speeds, then average speed is given by, means equal distances here means the same distance, half of the total distance with say speed v1, remaining half of the distance with speed v2, then average speed is given by 2 times v1 v2 divided by v1 plus v2. It should be remembered by you as a standard formula, right? If you don't know the formula, definitely we can use the simple concept that average speed is given by total distance traveled divided by indeed total time. Time taken here would be s by v1 plus time taken here would be s by v2. Now you simplify, you'll get 2v1 v2 divided by definitely v1 plus v2. Putting these values, value of v1 is given by v, v2 is 2v divided by again v plus 2v. We are getting this value as 4v by 3, dear students. So average speed is actually 4v by 3 here. We have option 4 as the correct one, dear students. The displacement time graph of two moving particles making angles of 30 degree and 45 degree with the x-axis as shown in the figure. The ratio of the respective velocities is. From the position time graph or from the displacement time graph, we get the velocity as like this. See, the slope of displacement versus time graph. Slope of displacement versus time graph gives the velocity. This tan theta would give the instantaneous velocity, or you just say velocity. Okay. So slope of velocity versus displacement versus time graph gives the velocity here. Now if there are two particles making an angle of 30 degree and 45 degree. So let this be particle A, this be particle B. Now for particle A, the velocity would be tan 30 degree, which is 1 by root 3. And for particle B, the velocity would be tan 45 degree, which is 1, dear students. And we are asked to find the ratio. So VA divided by VB would be 1 is to root 3 definitely. Right? So we have the first option being the correct one.